Assalamualaikum. My name is Erum Asim and I'm here to discuss the paper pattern of English language O level 2024. That is the new syllabus which was introduced in 2024. Okay. Now let's start with the paper pattern. What do we usually have? What do we have here? We'll have paper one, that is the reading part, and paper two, that is the writing part. Acha, when we talk about the marks, equally marks are divided in both. Okay, 50 marks for paper one and 50 marks for paper two. And then again, 2 hours are there for paper one. You'll have, which is ample of time. ठीक है, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा, मगर अच्छा खासा टाइम का मतलब इट्स नॉट देयर टू वेस्ट, बट यू हैव टू थिंक ओवर, प्लान प्रॉपरली, और एवरीथिंग बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है. ठीक है, 2 hours विल बी देयर फॉर पेपर वन एंड 2 hours विल बी देयर फॉर पेपर टू. अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. पेपर वन में विल हैव 2 sections. सेक्शन ए जो कॉम्प्रिहेंशन है, एंड सेक्शन बी समरी राइटिंग एंड शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन. अभी क्या है, विल डिस्कस इट लेटर. अच्छा, पेपर टू में विल हैव सेक्शन ए विच इज द डायरेक्टेड राइटिंग, और सेक्शन बी विच इज द कॉम्पोजिशन पार्ट. अच्छा, फिर हम आगे उसका डिस्कशन करते हैं. ठीक है. So the weightage, if we talk about the weightage of this marks, तो equally marks are divided. के रीडिंग के भी 50 मार्क्स है और राइटिंग के भी 50 मार्क्स है. ठीक है, तो ऑल टुगेदर they have put emphasis on both reading and writing. ठीक है, तो हमें भी दोनों पे emphasis देना होगा. ठीक है, now this is the first page of the paper and I have just mentioned it here so that you can see it very carefully that 2 hours time duration is there. ठीक है, और फिर this is, we are talking about a reading part, the reading paper. ठीक है, और 2 hours है इसके पास, और 50 मार्क्स का ये तो ओवरऑल पूरा क्वेश्चन पेपर है. ओके, लेट्स मूव टू द सेक्शंस. सेक्शन ए में हमारे पास है कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास जो है वो 16 मार्क्स का है. और उसके बाद हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास 9 मार्क्स का है. ठीक है, इसमें ये जो है ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इन्फरेंशियल क्वेश्चंस भी होंगे, रिफ्रेजिंग भी होगी, पिक आउट अ वर्ब भी हो सकता है. ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चंस जो है वो इसमें हो सकते हैं. ठीक है, एक पूरा हमारे पास जो है वो टेक्स्ट होगा विच विल बी ऑफ 900 वर्ड्स. ठीक है, इसी में से ही क्वेश्चन 1 भी होगा कॉम्प्रिहेंशन का जो 16 मार्क्स का होगा. और ये हमारे पास एक अदद सैंपल है जो हमारा क्वेश्चन जो स्पेसिमेन पेपर आया था उस तरह का, और यू कैन सी इट क्लियरली कि यहाँ पर जो है वो 16 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें 9 क्वेश्चंस दिए गए. ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि हमारे पास जो है वो इसमें किस तरह से जो है वो डिवीजन हुई भी होगी अबाउट दी मार्क्स. तो वो सब चीजें मेंशन है यहाँ पे क्लियरली कि किस तरह से डिवाइड हो सकती है. अच्छा, ये अप एंड डाउन भी हो सकता है. ठीक है, तो इफ दे आस्क यू अबाउट द क्वेश्चन, अगर हम जैसे बात करते हैं यहाँ पर हम वापस आ गए हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं दैट इफ दे आस्क यू टू गिव 2 फीचर्स ऑफ एनीथिंग, it could be anything. ठीक है, if we are asked you to give the 2 features or the 2 details, that means you have to mention 2 details and you have to mention 2 features, 2 different features. ऐसा नहीं है कि हमने एक ही बात को जो है वो इलेबोरेट कर दिया है, कोई एक ही फीचर को हमने इलेबोरेट कर दिया. चाहे हम जितना भी इलेबोरेट कर दें, हमें ये 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे until and unless we are mentioning 2 features or we are giving 2 different details. ठीक है, हमें ये 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, we only get 1 mark for it अगर हमने सिर्फ एक ही पॉइंट को इलेबोरेट किया. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गिविंग 2 different features or 2 details as the question is asked. ठीक है. Okay, now we'll move on to the next part, the second part of the question 2 of the same comprehension. ठीक है, the text will be the same, मगर ये जो है हमारे पास जो इसमें डिफरेंस आएगा ये 9 मार्क्स का है. और ये राइटर्स क्राफ्ट जो है या यूज ऑफ लैंग्वेज जिसको इन्होंने कहा है, एंड दिस इज अगेन द राइटर्स क्राफ्ट. इसमें क्या होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस हियर कि यहाँ पर सारे जो है वो इम्प्लिसिट टाइप के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट मींस कि जिसका हमें आंसर जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं होगा. द आंसर्स विल नॉट बी देयर. जैसे यूजुअली वी फाइंड द आंसर्स इन द टेक्स्ट, ठीक है, बट वी वोंट फाइंड द आंसर्स हियर. अब आप अगर इसको क्लियरली देखेंगे तो
see what type of questions are there. What does the writer want to suggest? Obviously, you won't find the answer there. What true impression the writer want to convey to the reader? ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये ओपिनियन बेस्ड होगा. यू हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन अबाउट द वट एवर यू हैव रेड. ठीक है, अच्छा वो ओपिनियन डिफर भी कर सकते हैं कि आपका ओपिनियन आपके फ्रेंड से डिफर कर सकता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर गलत है. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिकॉज यू वोंट फाइंड द आंसर इन द टेक्स्ट, सो यू कैन सजेस्ट एनीथिंग, यू कैन गिव एनी ओपिनियन, यू कैन गिव एनी आइडिया. ठीक है, तो इट वोंट बी रॉन्ग until it is relevant. ठीक है, now moving on to the next part. ये जो है इसका किस तरह से इसका मार्किंग क्राइटेरिया है, दिस इज अगेन मेंशन्ड हियर कि ये 9 मार्क्स का होगा. ठीक है, जो इम्प्लिसिट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, दैट इज द क्वेश्चन 2 ऑफ द सेम टेक्स्ट. ओनली वन टेक्स्ट विल बी गिवन फॉर द होल कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, उसी में से ये डिविजन हुई हुई है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन बी ऑफ द रीडिंग पेपर. पेपर 1 सेक्शन बी, वो क्या होगा, दैट विल बी द समरी राइटिंग and short response question. Summary writing will be of 20 marks and short response question will be of 5 marks. ठीक है, वो will discuss about it कि किस तरह से हमें उसको summarize करना है. और फिर उसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, 10 marks for the content, what important things, what important points you have extracted from the text, what was actually asked. ठीक है, तो दैट इज द रीजन व्हाट मेक इट रेलिवेंट, कि ऐसा नहीं है कि वी हैव टू जस्ट समराइज इट कंप्लीटली, मगर हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, वट एवर पार्ट ऑफ whatever topic they have given you or whatever part they wanted you to extract, तो आपने अगर उसको properly extract किया है, if all the points are relevant and they are extracted properly, उसके 10 marks है. And 10 marks for the quality of your writing, how you have finally summarized that thing. ठीक है, अच्छा, let us move on कि 10 मार्क्स जो है ये रीडिंग की है, यानी जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, जो आपने रेलेवेंट पार्ट उसका एक्सट्रैक्ट किया है, ये उसके 10 मार्क्स है. ठीक है, और कि उसका जो है वो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. आई एम अगेन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वट एवर दे हैव आस्क्ड यू टू एक्सट्रैक्ट. ऐसा नहीं है कि पूरा पैसेज समराइज करके नहीं बैठ जाइएगा, बट जस्ट मेक श्योर रीड आउट द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली. ठीक है, नाउ द 10 मार्क्स, another 10 marks will be for how you are summarizing it. ठीक है, what type of vocabulary you are using and how organized you are. ठीक है, कि आपने किस तरह से उसको प्रॉपरली, किस्म से प्रॉपरली टाइप उसको जो है आपने मेंशन किया है, प्रॉपरली उसको समराइज किया है, यूजिंग ऑल दोस ट्रांजिशनल वर्ड्स which are very important to make a flow of your writing. ठीक है, the transitional words should be used to make a proper flow, ताकि ऐसा नहीं लगे कि आपने अलग अलग सेंटेंसेस का एक पास जंबल अप कर दिया, ऐसा नहीं. there should be a flow in the writing. ठीक है, now let us talk about the next part, the short response question. वो जो है एक hypothetical question होगा. You will be given either you will be asked to be a character, to get yourself into a character, या they may ask you anything. ठीक है, वो एक short question होगा. ठीक है, and you will be given a situation and let's see how you are going to, maybe most of the time they usually have an interview. ठीक है, and you should be the character, the proper character, who maybe who could be anyone. ठीक है, let's see what the topic is there for the comprehension, उसी तरह से वो आपको जो है topic देंगे. ठीक है, okay. Now this is the marking criteria, what type of language you are using and how you are supporting or you are defending that particular thing. ठीक है, तो ये सारा डिपेंड करता है what topic you are given. Okay, now let's move on to paper 2, that is the writing part. The writing paper. तो उसमें क्या होगा कि again you will be having 2 hours, 50 marks are there, and this is the writing paper. Okay, तो again you will be given 2 questions. अच्छा, अब किस तरह से वो questions दिए हुए हैं और किस तरह से आपको उनको attempt करना है. The first question, which is the compulsory, like there won't be any choice.
Okay, whatever question is given to you, whether it be a speech, an email, or a report, or a letter, or a magazine article, you are supposed to write that particular thing only. That means you should have a proper grip on each and everything. You should know the format, how you're supposed to write an email, how you're supposed to write a report. What is the difference between a report and a letter, and what's the difference between a report and a magazine article, how you should write, how you should go on with the speech, how you should start your speech. So you should have all the knowledge of how you are supposed to do everything, because there won't be any choices. Okay, if you are asked to write a speech, you are supposed to write the speech only. There isn't any choice. So obviously you must know how to write all these things. Okay, now let us move on. This is one of the samples, the specimen paper which was given in 2024. Okay, and what they have mentioned here, see, two texts will be given, and it could be one text also. Okay, but usually because it's the starting, so they are giving two texts. And if one text is against, okay, if one text is against whatever the topic is, the other will be in favor of the topic. So what you're supposed to do, you're supposed to read both the text and just read out whatever the question is asked, what question is asked here. Okay, they ask you to evaluate the ideas and opinion in both texts. That means you have to read both the text, whether it be in favor or against, whatever is in the text. Okay, maybe they ask you, maybe they are giving you the advantages or disadvantages of a certain topic, whatever topic is given here. For example, see, they are giving the advantages and disadvantages of traveling to other countries. That means that the advantage, if one of the texts is talking about the advantages, the other is talking about the disadvantages. So you have to read both the texts. Okay, you have to evaluate. Okay, now the marks will be there, how you are going to evaluate these texts. Okay, I'll mention it. I'll tell you later how you are supposed to evaluate a particular text. Okay, then you are going to give your own opinion. You must make sure that you are covering both the bullet points. It is very necessary. Okay, if you're going to leave one of the bullet point, obviously you won't get good marks. Okay, so this is very important that both the bullet points should be answered very properly. And 250 to 350 words are there. Okay, the word limit is 250 to 350. Okay, now 10 marks are for the content of your answer. Now, what do you mean by content of the answer? What important points you have extracted from the text, and how you have evaluated that point. Okay, then 15 marks are for the quality of your writing. That means what type of vocabulary you are using, how you are writing it. Okay, the grammar, your grammar, your punctuation, everything, your spelling, all these things come under the heading of this, the quality of your writing. Okay, how you are, and what type of sentence structure you are using. Okay, that you must follow. You must use all the complex, the compound, the simple, all type of sentences. Okay, it shouldn't be one that you just move on with one type of sentence that is a simple sentence, and you just do it and you feel and you believe that you have done it very properly. No, there should be a combination of all these types of sentences. Okay, now let's move on to, this is the whatever is there that you must follow. The 15 marks are for this quality of your writing, and the 10 marks are for the content, whatever you have extracted and how you have evaluated it. Okay, see, when we talk about the 10 mark, the relevant facts, ideas, and opinions from the text only, how you are going to analyze, evaluate, and whatever you have written here. Okay, and then 15 marks are for the type of sentences you are using, the complex and well developed and effective, and it should be well organized, and the wide range of well constructed sentences, as I have mentioned earlier. Okay, that all three, four types of sentences should be there, and then it should be accurate, including complex sentences, the wide range of vocabulary. All these things are there in this the style. Okay, that is the 15 marks which you will get if you write everything perfectly. Now moving on to section B, that is the composition part. Now what you have to do, you will be having four choices here. Okay, and you can write on any one.
what are those four choices? See, two choices are there for the narrative writing and two choices are there for the descriptive writing. Now that is up to you, whatever you want to write on. Okay. So, for example, this is just an example that two descriptive topics are given and two narrative writing topics are given. Okay, now that is up to you what you choose. You have the choice here. Okay, let us move on. That you have one question, you have to attempt any one question from the choice of four, 350 to 450. See, this is the writing, the word limit which is there, 350 to 450. And 25 marks are there, that is, marks are equally divided. Okay, and how well you write it, that all depends on. Okay, now this comes under the content and structure. Okay, how you have started your writing about the plot, your setting,